आपने कभी विनेगर की बोतल घर पे देखी है? मम्मी से पूछा है ये कहाँ यूज होता है? कभी सोचा है ये इंस्टेंट सूप्स, चॉकलेट मिल्क शेक्स इतने थिक क्यों होते हैं? वेल, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर निखिल डागा एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ विनेगर प्रोडक्शन एंड xanthan gum. So let's begin. Vinegar production. Vinegar is used in each country of the world to impart sour taste to food materials. It is also used in the preservation of pickles, achar, ketchups, sauces, chutneys. For their preservation हम vinegar use करते हैं. Now chemically vinegar is 4% acetic acid. ये आने वाले बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है. Remember, vinegar is 4% acetic acid. Correct. अब फैक्ट्रीज में विनेगर बनता कैसे है? We use carbon compounds like fruit juices, maple syrup, starch of roots, sugar molasses. These products undergo fermentation in the presence of the microbe Saccharomyces cerevisiae to form the first compound, which is ethanol. You need to remember the first step of vinegar production. After this ethanol, in the presence of two microbes, Acetobacter and Glucanobacter, undergo microbial degradation to give us acetic acid and byproducts. This is the second step in vinegar production. After this acetic acid needs to be separated from the byproducts by the process called as rarefaction. In this way, we get the acetic acid. So this is the next step in vinegar production. अब हम इस एसिटिक एसिड को पोटेशियम फेरोसाइनाइड की मदद से ब्लीच करते हैं. So this is the next step in vinegar production, that is bleaching with potassium ferrocyanide. After this acetic acid is pasteurized. Pasteurization is boiling at a high temperature followed by sudden cooling. So now you have bleached the acetic acid and then pasteurized it. After pasteurization, in this acetic acid, we add a small amount of SO2. What is SO2? Sulfur dioxide. Correct. And here we have vinegar. So this is the final step, addition of SO2 to form vinegar. तो अब हमारा विनेगर प्रोडक्शन का आंसर कंप्लीट हो गया है. हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज कर दिया है इस स्लाइड पे. आप आराम से इसको रिवाइज कर लीजिए एंड देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. रिमेंबर, हमने शुरू में पूछा था कि ये सब इतने थिक कंसिस्टेंसी वाली फूड आइटम्स कैसे बनती है. वेल, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जरा जल्दी से देख लेते हैं. आइसक्रीम्स, पुडिंग्स, चॉकलेट्स, मिल्क शेक्स, चॉकलेट ड्रिंक्स, इंस्टेंट सूप्स. वेल, इन सारे फूड आइटम्स में इतनी थिक कंसिस्टेंसी आती कैसे? ये इंपार्ट कौन करता है? द आंसर इज xanthan gum. हमारा अगला टॉपिक. स्टार्च, मोलासेस, हम इनको फर्मेंट करते हैं टू मेक आवर xanthan gum. इनको फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ xanthomonas species टू ऑब्टेन xanthan gum. अब ये xanthan gum क्यों यूज होता है इन फूड आइटम्स के लिए? उसके लिए xanthan gum की प्रॉपर्टीज देखते हैं. इट हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर एज वेल एज कोल्ड वाटर. इसलिए इंस्टेंट सूप्स भी बनते हैं और मिल्क शेक्स भी बनते हैं. इट हैज हाई डेंसिटी, इसलिए इन फूड आइटम्स में वो डेंसिटी, वो थिकनेस प्रोवाइड होती है xanthan gum की मदद से. Finally, we shall see the uses of xanthan gum. It is used in the preparation of pigments, fertilizers, weedicides, textile pigments, toothpastes, and high quality paper. If you write down all these points, you will be able to score really well in the upcoming boards. We've covered two topics, vinegar production and xanthan gum. Hope you understood that.